कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के रूल्स को लर्न किया था, लेकिन एक सच बताऊं तो रूल्स लर्न करने से इंग्लिश नहीं आती, प्रैक्टिस करने से आती है। तो आज हम वही करने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट 100+ अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी नहीं भूलोगे। मेरी तरह कॉपी लेकर बैठ जाओ और जोर जोर से बोलना है जो पड़ोसी भी परेशान हो जाए कि आज इसको क्या हो गया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे PDF निकाल लिया था, राइट भी करूँगी जिससे ये और अच्छे से रिवीजन हो जाए मेरा। इस PDF में 100+ अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इन्हें रोज आपको बोलना है। आप इसी तरीके से पेपर निकाल लीजिए, स्पीक करिए डेली। अगर आप इन्हें लिख लेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। I wake up early. I brush my teeth. I take a bath. I wear clean clothes. I drink water. I drink milk. I eat breakfast. I go to school. I go to college. I study English. I read books. I write notes. I learn new words. I speak English. I help my mother. I help my father. I cook food. I wash my hands. I clean my room. I watch TV. I use my phone. I listen to music. I play cricket. I play football. I walk every morning. I exercise daily. I pray to God. I respect my parents. I love my family. You speak politely. You work hard. You read newspapers. You write letters. You sing well. We study together. We play together. We go to the market. We watch movies. We help each other. They live in Delhi. They play chess. They work together. They speak Hindi. They read magazine. He gets up early. He goes to school. He studies English. He plays cricket. He drinks tea. He eats breakfast. He reads books. He writes stories. He helps me. He drives a car. She wakes up early. She cooks food. She goes to college. She teaches English. She sings songs. She dances well. She reads novels. She writes poems. She helps her friends. She drinks coffee. It rains in July.
It looks beautiful. It works well. The sun rises in the east. The moon shines at night. Birds fly in the sky. Fish live in the water. Cows give milk. Dogs bark loudly. Cats drink milk. Children play in the park. Teachers teach students. Students learn lessons. My father works hard. My mother cooks delicious food. My brother plays football. My sister draws pictures. My friend helps me. Rahul studies every day. Riya sings beautifully. Amit drives carefully. Neha speaks English. We drink clean water. I love nature. You respect elders. They visit temples. He washes his hands. She wears a red dress. The baby smiles. The train arrives on the time. The bus stops here. Flowers smell sweet. Trees give us oxygen. Honesty brings success. And the last one is practice makes perfect. So I hope you speak loudly these 100 affirmative sentences because जो भी सारे sentences थे सारे sentences हमारे डेली रूटीन से रिलेटेड थे. तो आप इसे कंटिन्यू जिस तरीके से मैंने लाउडली आपके सामने स्पीक किया है आप भी इसी तरीके से इनको लाउडली वे में स्पीक करना है. और हो सके तो इनको नोट डाउन भी करिएगा. जितना आप नोट डाउन करेंगे जितना आप इसको लाउड करेंगे उतना ही आपका फ्लुएंट होगा स्पीक. डे 4 में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे विद 100+ एग्जाम्पल्स. जो जैसे मैंने आज आपको एफर्मेटिव को शेयर किया हुआ है उसी तरीके से मैं कल आपको नेगेटिव के 100+ एग्जाम्पल्स लेकर आऊँगी जिससे आप उसमें भी एक महारत हासिल कर लो. एंड बिलीव मी अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को ही अपना स्ट्रॉन्ग बेस बना ले तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी 101% होगी जब आप इसे कंटिन्यूसली बोलना मेरे साथ स्टार्ट करोगे. डे 4 के लिए हमारी वीडियोस को मिस मत करना और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो. तो डे 4 मिस मत करिएगा. सी टुमारो डे 4. कमेंट में अपने 5 या 10 फेवरेट सेंटेंसेस जरूर नोट डाउन करना. मैं उन्हें चेक करूँगी और जिसने भी अपने मतलब करेक्ट वे में डाउन किया है मैं उसको नाम भी लूँगी अपने डे 4 में.